Welcome to WeLearn. This is session number 1 of Multimedia of Business Intelligence and Tools. In this session, we are going to cover following topics: definition of business intelligence, information and intelligence, business intelligence value chain, factors of business intelligence system, real-time business intelligence, and BI applications, that is business intelligence application. First of all, definition of BI. Business intelligence is an umbrella term that refers to a variety of software applications that is used to analyze an organization's raw data. It is fundamentally concerned with transforming your organization's operational data into an available store of valuable information, which we called as data. Means आपने जो ऑपरेशन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा है जो आप ऑपरेशनल परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, उसके अंदर जो डाटा है आपको हेल्प करता है बिजनेस में, हम उसे टर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन डाटा में. और जब हम उस डाटा को यूज़ करते हैं, मीन्स हमने उसके डाटा को स्टोर कराना है एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में, तो हम उसको नाम देते हैं डाटा वेयर हाउस. इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूटिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द राइट वे एट द राइट टाइम. BI, that is business intelligence, is made up of number of connected actions including data mining, business value intelligence, decision making and so on. Thus a BI system can be called as decision support system just because of that कि क्योंकि हम इसको डाटा माइनिंग कोई भी एक डिसीजन मेक करने में यूज़ कर सकते हैं. बिजनेस वैल्यू इंटेलिजेंस के तरह भी हम इस डाटा को यूज़ करते हैं, तो हम इसे टर्म कर सकते हैं एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह. Business intelligence is a wide category of applications and technologies which gather, store, analyze, and provide access to data. It also helps enterprise users to make better business decisions. Business intelligence applications involve the activities of decision support systems, query, and reporting, and also your OLAP. OLAP is online analytical processing. The business intelligence applications include firstly mission critical and important to an enterprise function. वो applications जो एक business के mission को अगर हमें achieve करना है, हम उनको use करके achieve कर सकते हैं. Moreover, enterprise के functioning के लिए वो applications बहुत ज़्यादा necessary हैं. Second application includes centrally started और driven by a user demands. Means जो हम user की demand आती है उसके response में उस applications को हम start करते हैं. एंड लास्टली एंटरप्राइज वाइड और रिस्ट्रिक्टेड टू वन डिवीजन, सब डिवीजन और प्रोजेक्ट. एक डिवीजन के या पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड अगर वो एप्लीकेशन है तो हम उसे इस कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं. बिजनेस इंटेलिजेंस इज अ टर्म यूज टू रेफर अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज a company may undertake to gather information about their market or their competitors. There are some activities like some are competition analysis, market analysis, industry analysis, predictive analysis and online analysis. Other activities, data mining, benchmarking, text mining, these are all some activities related to your business intelligence term. क्योंकि बिजनेस इंटेलिजेंस में हम इन सभी एक्टिविटीज़ के थ्रू ही अपनी इन्फॉर्मेशन को मार्केट से गैदर करते हैं, या फिर अपने कंपिटिटर्स की अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी हम इन्हीं एक्टिविटीज़ को फॉलो करके उस इन्फॉर्मेशन को लेते हैं. Business intelligence in depth. Business intelligence provides in-depth knowledge about performance indicators such as your customer, competitors, economics environment and internal operations. These are some performance indicators because इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है. मीन कस्टमर कितने गैदर कर सकते हैं, कितने अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके अपने कॉम्पिटिटर्स से जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो कितना आउटकम दे रहे हैं और उससे रिलेटेड आपको कैसे उसको चेंज करना है. लाइक सम इंटरनल ऑपरेशंस आर देयर. सो दीज आर सम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स विच आर रिलेटेड टू योर बिजनेस इंटेलिजेंस. द मेन चैलेंज of the business intelligence is to gather and serve the planned information regarding all the applicable factors which make the business profitable and allow you to access the knowledge easily. Moreover, the company has intranet based dashboards to let different departments benefit from some of the insight mined by the finance department
altering them to where they need to focus their effort in order to meet all the financial targets. बिजनेस का मेन एम है आपको अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को मीट करना होता है. सो बिजनेस इंटेलिजेंस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप उस अपनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कैसे गैदर करें और मोर ओवर उसको प्लान्ड वे में कैसे यूटिलाइज करें अपने एप्लीकेशंस को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, जिससे कि आपका बिजनेस जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए. Business intelligence. A data warehouse is designed for query and analysis rather than for transactional processing. Business intelligence solution involves performance management, enterprise reporting, and your data mining. बिजनेस सॉल्यूशंस के अंदर अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिपोर्टिंग और डाटा माइनिंग, ये 3 ऐसे हैं जो बिजनेस इंटेलिजेंस के कंपोनेंट होते हैं. आपका जो परफॉर्मेंस है, मीन्स अगर आप कहीं पे बात करें बिजनेस इंटेलिजेंस में और उनके सॉल्यूशंस में, तो ये तीनों के तीनों उसके अंदर ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो जाते हैं. दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ योर business intelligence solutions because a business intelligence provides an integrated business intelligence and your data warehousing solutions that meets its business needs. These solutions give an organization the ability to plan performance for your business strategies, goals, and the objectives also. Enterprise reporting. The enterprise reporting provides the organization with the information that is needed to check or control your behavior which are associated to your performance, and also there is a term known as data mining. The data mining is used to identify the trends, to identify its customers, its internal relationships of organization performance, and also it is also a web-based tools and processes best suited to meet the needs of each organization which is based on their size and needs. सो बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर ये तीनों टर्म्स, फर्स्टली आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, सेकेंडली जो एंटरप्राइज की रिपोर्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आपने ये बता रखा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे आप उसके बिहेवियर को कंट्रोल या फिर चेक कर सकते हैं, वो सब आपका एंटरप्राइज रिपोर्टिंग का पार्ट है. और डाटा माइनिंग के अंदर जितने भी ट्रेंड्स को आप फॉलो करते हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई योर ओन कस्टमर्स एंड ऑल्सो टू आइडेंटिफाई द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन योर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, सो उन सब वेब बेस्ड टूल को हम डाटा माइनिंग में कंसीडर करते हैं. सो ये तीनों मिलकर आपके बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस को फॉर्म करते हैं. नाउ हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ योर बिजनेस इंटेलिजेंस. Business intelligence is a managerial concept which helps manager in the organization to manage information and make factual decisions. This idea has become very popular moment for your business concerning in the adding value for your decision making processes. Business intelligence का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है डिसीजंस बनाने में. सो जो पुरानी प्रोसेसेस थी आपकी डिसीजन मेकिंग के, उसके अंदर एक एडिशनल एडवांटेज ऐड हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ योर BI. The 21st and 20th, these 2 centuries are known as information and technology age because before the beginning of the information age, it is very difficult to access any information in the absence of computing methods. So all the business decisions were largely based on your intrinsic. But today's in modern globalized world, the application of BI technology is becoming popular day by day in almost all kind of businesses. So जो आपकी 20 और 21st सेंचुरी, हमने इसके अंदर BI की स्टेट को यूज़ करना स्टार्ट किया जस्ट बिकॉज हमने इसको नाम दिया इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एज, बिकॉज हमें अब जो पुराने मेथड से इंफॉर्मेशन गैदर करने के उनके ऊपर रादर देन डिपेंड होने के हमें नए मेथड्स लाइक BI मिल गया है जिसके को यूज़ करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी एरिया से गैदर कर सकते हैं. एज वेल एज इज हिस्ट्री इज़ कंसर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1958 IBM researchers named H. Peter used the term business intelligence. He defined it as the ability to apprehend the interrelationships of presented facts in such a way as to guide the action toward a desired goal. In 1989, H. Dressner proposed BI, that is business intelligence, as an umbrella term to describe concept, methods to improve business decision and making by using fact-based support systems. So these are 2 definitions given by 2 different persons in 2 different years. With the growing competition in the market, the small to large organizations are adopting BI to just understand the need of this economic
trends. Now, BI segments. The most important segment or area that business intelligence covers are data warehousing, that is its architecture, modeling, managing, and processing. Secondly, ETL processing and data integration. Then your CPM, forecasting and reporting. Then reporting, information visualization and dashboards. Then we have OLAP. OLAP is your online analytical processing and multimedia, OLAP and multi-dimensional analysis. Next is data cleansing and data quality management, data mining, statistical analysis, forecasting, and lastly is MIS, that is your management information system. So these are some segments or area for your business intelligence. The particular business intelligence or business value of this business intelligence lies in its use within the organization, processes that impact working process, that constrain profits or reduce cost in its use without or within those working process itself. John defined BI tools which are used for finance department. In these tools we first have planning, budgeting and forecasting. Contribution, aggregation, manipulation, and the approval of the financial plan on a periodic and continual basis are the part of this. Means प्लान करना बजट के बारे में और ये फोरकास्ट करना कि कब तक हम इस प्लान के अंदर वर्क कर सकते हैं, कब हमें उस फाइनेंशियल प्लान का अप्रूवल मिलेगा, कितने पीरियड में, कितने कॉन्टिन्यूअल बेसिस पे, वो सब आपका प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग का पार्ट होता है. सेकेंडली वी हैव फाइनेंशियल कंसोलिडेशंस एंड रिपोर्टिंग. इन दिस वी हैव लीगल systems along with more comprehensive financial statement generations and the capabilities. Then we have financial analytical dashboards, profitability application, role specific dashboards, metric and specific financial analytics for detailed financial processes are the part of this. Then financial governance, risk management and compliance. In this we have governance and control requirements that include national as well as your international regulations. Lastly, scorecard and strategies. Methodology based scorecards such as your balance scorecard and strategy management applications are the part of this tool. So these are some tools which are related to your financial department. Now, what is the difference between your information and intelligence? Information इज़ योर जस्ट योर रॉ डाटा. वो डाटा जो आपने जस्ट गैदर किया है वो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है. बट ऑन द अदर हैंड इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ब एंड इट्स मीनिंग इज़ टू अंडरस्टैंड एंड टू चूज़ बिटवीन. मीन्स इंटेलिजेंस पावर को हम यूज़ कर रहे हैं जस्ट अपने उस इन्फॉर्मेशन या उस डाटा को समझने के लिए, या फिर दो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से अपने अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चूज़ करने के लिए. देन इन्फॉर्मेशन इज़ वेरीफाइड टू बी प्रिसाइज. But on the other hand, intelligence refers to a intelligence cycle. Information में जितनी precise to precise हम information रख सकते हैं उतना हमारे लिए better होता है. But in intelligence we have a continuous cycle which is maintained. Information must be timely. On the other hand, intelligence is logical rational process. In the information, we are present the information within the context, but in intelligence we must gain knowledge. Information part, effective understanding and decrease in uncertainty. But in intelligence we need to identify its importance and link between other datas. Moreover, in intelligence we develop a plan for our action and then use this plan to accomplish our own desired work. So here is a clear distinction between your information and intelligence. Information में हम कैसी information लेते हैं, information timely होनी चाहिए, understandable होनी चाहिए, मोर ओवर उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए. बट ऑन द अदर है इंटेलिजेंस, हम किसी चीज़ में जब चूज़ करते हैं उसको समझना, उससे नॉलेज गेन करना, मोर ओवर अपने एक्शन के लिए एक प्लान को डेवलप करना और उस प्लान को यूज़ करते हुए एक डिज़ायर्ड वर्क को परफॉर्म करना. दिस इज़ अबाउट योर इंटेलिजेंस. बिजनेस इंटेलिजेंस वैल्यू चेन. Business intelligence involves the combination of your core data with correct contextual information. It detects significant events and clarifies the issues to examine business trends, to develop
and to adapt the quickly the conditions. Then it also depends on investigation and analysis of unrelated data to just provide relevant insights, identify trends, and discover opportunities. So this is all about your business intelligence वैल्यू चेन. पर्टिकुलर बिजनेस इंटेलिजेंस वैल्यू चेन जो है वो एक कोर डाटा का कॉम्बिनेशन होती है विद कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन. जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं देन इट बिकम अ बिजनेस इंटेलिजेंस. BI value chain, that is business intelligence value chain. In this, data resource is your initial stage where the data is developed from your data resources. Moreover, knowledge is the raw material for your business intelligence which supports your business strategies. This is the value chain related to your business intelligence. सबसे बिलो में हमारे पास है डाटा रिसोर्स बिकॉज इट इज़ द इनिशियल स्टेज. जब हम डाटा गैदर कर लेते हैं हम उसके ऊपर इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग करते हैं, मीन्स उसे इन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. देन उस इन्फॉर्मेशन से हम कैसे नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं, मीन्स नॉलेज को कैसे गैदर करते हैं उस पर डिपेंड करता है हमारे नॉलेज इन्वायरमेंट. एंड देन वी प्लान आवर बिजनेस इंटेलिजेंस एंड लास्टली द बिजनेस स्ट्रैटेजी. सो दिस इज योर वैल्यू चेन वेयर इनिशियल पॉइंट इज योर डाटा रिसोर्सेज एंड लास्ट इज योर बिजनेस स्ट्रैटेजीज. Business intelligence is involved in data. Like it is a raw fact. Data is just a raw fact. It is meaningless and difficult to understand. Facts are figures, characters, character strings, image, voice. All these are meaningless and difficult to understand. Then we have information. Information, it is just a set of data that is relevant to one or more person in the time or for a period of time. Information is data with meaning, significance, and reason. A message without meaning, significance, or reason is simply a noise, not a message. Then we have knowledge. Knowledge is just an awareness of a fact or condition to know something with knowledge gained through experience or involvement. It is also associated with knowing truth or fact. Then we have organizational knowledge. It is just the information that is significant to an organization. नॉलेज किसी भी चीज़ के बारे में अवेयरनेस होना और ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज जिसके अंदर हम अपना एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग इन दोनों को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन से उसके नॉलेज को अडॉप्ट करते हैं. पर्टिकुलर दिस नॉलेज इज़ अ रैशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट लीड्स टू योर बिजनेस इंटेलिजेंस. एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 3 मेजर रिसोर्सेज. कैपिटल मीन्स जितनी इनिशियल इनकम उसने अपने बिजनेस में लगाई है. सेकेंडली योर मैन पावर एंड लास्टली द डाटा रिसोर्सेज. इन दिस वी हैव अ टर्म नॉलेज मैनेजमेंट. Knowledge management is the management of an environment where persons create tactic knowledge and convert it into explicit knowledge, delivers and ultimately delivers it to your organization. It is just the process to create, organize, and distribute information among the persons. It finds bodies of knowledge precise to be needed and presented them in a suitable manner for explicit business processes. Then we have data and context data that can be stored in databases. There are more of databases which are just files or a table of information. The information can't be stored in a database because relevance to person at a point in a time can't be stored. It is just stored as data in context. Same, a report is stored in a form of data in context, but whereas report has a labels and headings. सो हम डाटा कॉन्टेक्स्ट या डाटा को कैसे स्टोर करेंगे अपने डाटाबेस में, ये पर्टिकुलर उससे डील करता है. एंड लास्ट अगेन इज़ योर नॉलेज. एज नॉलेज इज जस्ट अ स्टोरेज. मीन्स अगर हमें नॉलेज को मेंटेन करना है तो हमने उसे स्टोर करके रखा है. सो पर्टिकुलरली नेम्ड एज नॉलेज स्टोरेज विच इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स that conduct research, captures the relevant information and store it for your sharing among knowledge persons. Now there are certain factors which are certain factors related to your BI system. Organization analyze and business data through spreadsheets. These spreadsheets are very costly and are in hand of few employees. Business intelligence applications are effortless to use and build information more available. The factors are accuracy, relevant, and timeliness.
Accuracy is the most important parameter in business intelligence. There are certain few questions which are related to this factor, like the internal data source for the business system accurate or not. Moreover, the proper business rules in a place to ensure the data accuracy. Second factor is relevant. Business intelligence system relevancy is a major problem for many organizations. Like, is the organization aligned to strategic operations or goals of the organization or not? Is the information being provided by BI system relevant to the end user community or not? So, there are certain questions related to this relevant factor. And lastly, factor we have is timelines. Timelines. The key component for determining value of business intelligence solution depends on timelines. Questions related to this are, is the data being provided in time frame, मीन्स जितना पर्टिकुलर टाइम फ्रेम हमने उसको दिया था उसी टाइम फ्रेम में हमें डाटा मिल रहा है या नहीं. इज़ द रिपोर्ट being distributed to your sales management in time? Is the value relevant for the data delivery cycle or not? So these are the factors which are related to your business intelligence system. Real-time business intelligence. In this competitive world with high consumer expectations, the decisions that are based on the most current data available will improve the customer relationship, income, increase the income, and maximize the operational efficiency. There are many business intelligence suppliers which are starting to offer a real-time financial analytical system which gives financial directors immediate access to data on their production or transaction systems without waiting for the data A to load into your data warehouse. In this particular RTBI, that is your real time business intelligence, we maintains the current state of enterprise. जो current state है आपकी enterprise की, हम उसको इस particular real time business intelligence में maintain करते हैं. Moreover, RTB provides us the real time strategic support to form project performance that reacts to immediate events. It particularly replaced both the traditional data warehouses. To turn data into information, companies need 3 steps. Firstly, data warehouse. Secondly, your business intelligence. And lastly is analytical. In first phase, that is your DW, the company need a place for data to reside and rules on how the data should be structured. Secondly, business intelligence. The companies need a way to slice and dice the data and to generate the report. And last is your analytics. The companies need to extract the data, analyze the trends, and then uncover the opportunity to find new customer segments. So, these are the 3 process. जब हम इन तीनों प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं तो हम डाटा से इन्फॉर्मेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपने डाटा को इन्फॉर्मेशन में. Moreover, the RTB system provides a real-time tactical support to derive the enterprise action that react immediately to events as they occur. Now, data warehouse. What is data warehouse? Data warehouse solves a strategic need of a enterprise. It just manipulates the huge amount of information via your data mining, which is used to derive new information and the knowledge of your enterprise operations. Particularly, data warehouse is used to support certain strategic goals like reducing cost, increasing sales, improving profits. These are some strategic goals, means goals which are related to our strategy. हम जो strategy follow करते हैं तो हमारे mind में रहता है कि strategy से cost minimum से minimum हो, sales उतनी ज़्यादा हो जिससे कि हम अपने profit को improve कर सकें. So these are some strategic goals, and for this we need data warehouse because data warehouse solves the strategic needs of the enterprise. BI applications. Business requires the ability to make informed decision in a given time frame. So there are certain applications which we can use to get our decisions timely. The business decision, because it requires the ability to make decisions in a given time frame, so we evolved business applications. Business application or business intelligence is an application and technology for gathering, storing, analyzing, and providing access to data to just help project users to take better business decisions. It also serves a particular focused purpose. A purpose may be defined by the communities
tools, or your business process? Do it yourself. Firstly, what is the difference between information and intelligence? Second question, define the real time business intelligence application. Thank you. Happy learning, we learning.